Yeah, so let's start with new topic, that is frequency hopping spread spectrum. Last time we had seen what is direct spread spectrum. Now we'll see how does it is differing from this one. Now, frequency hopping spread spectrum is a technique where we split the total available bandwidth into smaller bandwidths or say smaller channels within having a guard spaces between them. मतलब अगर एक बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो हम उसको बहुत छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद प्रॉपरली उसे गार्ड स्पेसेस से अलग रखते हैं सो दैट देर इज नो क्लैशेस देर इज नो लाइक सिग्नल मिक्सअप या डिस्टर्बेंसेस आए ज्यादा सो at each end there is a transmitter and receiver which have to stay for a certain time and then they hop on to next frequency. For example, looking at this diagram, if you see over here, यहाँ पे ये पूरा frequencies available है लेकिन हमने वो frequencies को parts में divide किया है. So if you see, this is a 6-bit data which I want to transfer, out of which first 3-bit data is using frequency 2. यानी ये पहला bit frequency 2 use किया, next दोनों bit ने भी frequency 2 use किया. बट उसके बाद का जो नेक्स्ट बिट आ रहा है इट इज यूजिंग फ्रीक्वेंसी 3, उसका जो नेक्स्ट बिट आ रहा है इट इज ऑल्सो यूजिंग फ्रीक्वेंसी 3. So what is happening over here is कि entire frequency पे जो available है वो हम उसको divide कर रहे हैं smaller bandwidth में so that there is a lot more speed. Transmitter and receiver क्या करते हैं, थोड़ा time एक frequency पे रहते हैं, then they switch on to other frequency for passing their messages or say for passing their bits. So this technique is implemented in FDM and TDM. The sequence pattern the pattern of the channel usage is called as hopping sequence because it is hopping, or say because it is switching from one frequency to another, we call it as hopping sequence. The time spent on a channel with a certain frequency is called as dwell time. मतलब जो transmitter and receiver they are spending थोड़ा टाइम फॉर ट्रांसमिटिंग और से रिसीविंग अ बिट और एनी अमाउंट ऑफ डेटा, तो एक चैनल पे एक फ्रीक्वेंसी पे वो जितना टाइम स्पेंड करते हैं while exchanging information, that time spent on that frequency is called as dwell time. FHSS come in two variants, slow and fast hopping. Now slow hopping is जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे किया था, this is slow hopping where पहले first 3 bits are using one frequency, next 2 bits will use one frequency, फिर उसके बाद के 1-2 bits रहेंगे वो दूसरा frequency लेंगे. This is called as slow hopping. यानी हम आराम से एक एक bit ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर हम हॉप कर रहे हैं from one frequency to another. Slow hopping systems are typically cheaper and have relaxed tolerances. मतलब implement करने में बहुत simple होता है, बहुत cheaper होता है and relaxed tolerances मतलब ट्रैफिक का कभी भी इशू नहीं होता, कंजेशंस का प्रॉब्लम नहीं होता, नीदर वहां पे क्लैशेस या सब होता है ना और डिस्टर्बेंसेस, सॉरी, तो डिस्टर्बेंसेस का भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता. But they are not as immune to narrowband interference as fast hopping systems. As I said कि disturbances का problem भी नहीं होता, but compared to narrowband system जो हमने पहले के देखे थे टेक्निक्स में सारे, उसके कंपैरिजन में स्लो हॉपिंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस इन्वॉल्व होने का चांसेस है if we compare it to fast hopping. स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग इज एन ऑप्शन फॉर जीएसएम, यानी जीएसएम के लिए हम स्लो हॉपिंग यूज कर सकते हैं. If you see from the diagram, this is called as fast hopping. Fast hopping मतलब एक बिट एक फ्रीक्वेंसी पे दूसरा बिट दूसरा फ्रीक्वेंसी पे फटाफट, मतलब जितना भी अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज है वी आर यूजिंग इट एंड वी आर हॉपिंग क्विकली फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर. इफ यू सी, पहले मैं फ्रीक्वेंसी 1 यूज किया, फिर फ्रीक्वेंसी 2, फिर फ्रीक्वेंसी 2, फिर 1, फिर 3, फिर अगेन 2, 3, 1, इट इज गोइंग ऑन. So that is called as fast hopping. वन बिट ऑन ऑल फ्रीक्वेंसी इन टाइम शेड मैनर, यानी इफ यू सी ये जो एक बिट है वो सारे फ्रीक्वेंसीज पे फटाफट फटाफट कैच हो रहा है, यानी जो फ्रीक्वेंसी पे फटाफट द मैसेजेस आर सेंड और रिसीव दैट फ्रीक्वेंसी विल बी यूज्ड. Fast hopping systems are more complex to implement because the transmitter and receiver have to stay synchronized with smaller tolerances to perform hopping at more or less same point in the system. यानी ये बहुत कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए बिकॉज ट्रांसमीटर रिसीवर को सिंक्रोनाइज रहना बहुत जरूरी है बिकॉज द हॉपिंग टेक्स प्लेस सो फास्ट और से ऑलमोस्ट इन द सेम टाइम, तो जितना क्विकली द सेंडर इज सेंडिंग उतना क्विकली द रिसीवर शुड बी रिसीविंग दैट डेटा.
However, these systems are much better at overcoming the effects of narrowband interference. जैसे हमने देखा था स्लो हॉपिंग में कि डिस्टर्बेंसेस कंपेयर टू फास्ट हॉपिंग, नैरो बैंड में डिस्टर्बेंस सॉरी स्लो हॉपिंग में नैरो बैंड का डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस ज्यादा होने का चांसेस होता है, बट नॉट इन दिस केस. However, over here it might have lesser effect कि या हो सकता है कि डिस्टर्बेंसेस या नॉइज सिग्नल्स इंड्यूस ही ना हो. And frequency selective fading as they only stick to one frequency for a very short time. इसमें भी ऐसा है कि fading नहीं होता है signal का because they are sticking to that signal only for a shorter period of time. Slow hopping में क्या है because they are spending much more time on a single frequency, it may happen that signal is lost or the signal fades. जैसे मैंने बोला हर एक signal का एक strength होता है to travel. If its strength weakens while traveling, that signal might not receive properly at the receiving end. But ये सारा जो disadvantage है वो fast hopping में नहीं होता है. Another example of FHSS is a Bluetooth system. Now Bluetooth system is quickly जैसे हम देखते हैं यहाँ से वहाँ hop करने वाला frequencies use करता है. So Bluetooth is the example or the application of FHSS. ये रहा the transmitter and the receiver over here. This will cover in the next video.